Hi guys, welcome to Creative Java Programming. In today's topic, we are going to learn about how to install JDK 8. How we can install JDK 8? We need to just write on Google, download JDK 8. Click on first link, Java EE 8 achieve downloads. Here we have to check we have an account or not. I have an account, so I will sign in. If I don't have an account, then we need to create an account. So I have already an account, so I don't need to create an account. So I just click on sign in. I will log in from my username, password, and sign in. I want to download Windows 64-bit. If you are using 32-bit, then you need to download this one. If you are using 64-bit, then you need to download this version. How we can check which version we are using? So we need to go to our PC, just right click on properties and see system type here, 64-bit operating system, 64-bit based processor. I just click on this link and JDK 8, just click on download. So downloading will start. Once download is complete, just right click and run as administrator. Just right click on next and finish. Next, just click on OK. Click change to install a different folder. If you want to install your JDK on D drive, E drive, so you can just like click on change, you can change the, and if you are default, then only click on next and finish. Next, close. How we can set the path of JDK? So we will go C drive, and in C drive we have to go program files. Here we have installed Java. Here JDK. I have already installed JDK 1.8, but again today I installed, so these are showing JDK to JDK 1.8, JDK 1.8.
and JDK 17 is also is there, but I will press on JDK 8, bin, and click on here and copy this file and just close it and just click on write system, and here you need to go advanced system setting and edit environment variable. After then click on new and here give path, यहाँ वेरिएबल हमको यहाँ पेस्ट कर देंगे, जस्ट ओके, सेलेक्ट पाथ, ओके ओके, दैट्स इट. Just we have to check cmd command prompt, enter. अभी how we can check our JDK 8 is installed or not? So we have to write a command java/version. So JDK 1.8 install. अब हमें जैसे कोई एक प्रोग्राम जावा का बनाना है, उसको हमें सेव करना किसी फोल्डर में, तो जैसे मान लीजिए नोटपैड पे हमने एक प्रोग्राम बनाया, इसका नाम हमने दिया जैसे क्लास ए पब्लिक स्टैटिक void main string args. System.out.println. Welcome to creative Java programming. हमें इसको सेव करेंगे, क्लास के नाम से ही हम फाइल को सेव करेंगे. a डॉट एक्सटेंशन जावा, और यहाँ पे always keep that in mind. Save as type, we have to always select all files. So I have already a folder in D drive Java और से हम एक यहाँ फोल्डर बना लेते हैं, जावा प्रोग्राम्स. सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, इसको रीनेम करते हैं जावा प्रोग्राम. इन डी ड्राइव फोल्डर जावा एंड जावा प्रोग्राम्स, इसको हम रन करेंगे. ये md डी हमने मतलब कौन से, जैसे हमने सेव किया था डी ड्राइव में, तो हम जाएंगे डी ड्राइव में डी कूलर, और डी ड्राइव में हमने किस नाम से फोल्डर बनाया था चेक करेंगे. बहुत सारे फोल्डर हैं, तो हमने बनाया था जावा नाम का एक फोल्डर, जावा. सो cd जावा, यहाँ हम चेक करेंगे
इसमें क्या बनाया था हमने, जावा प्रोग्राम, तो cd जावा प्रोग्राम्स, ये हो गया। अब इस फाइल में हम चेक करेंगे इसमें क्या है, कितना हम फोल्डर a डॉट जावा, तो हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे, जावा सी a डॉट जावा, फाइल इज कंपाइल्ड एंड आई विल राइट जावा ए टू रन प्रोग्राम। यहाँ से सी हटा देंगे, जावा हटा देंगे। वेलकम टू क्रिएटिव जावा प्रोग्रामिंग। सो our installation is done and setup is also done. We can write on a program and we can compile and execute our program. That's all guys in today's topic. Bye bye, take care.